Okay. So yesterday we have seen the time dependent actions and also one the concept of field update, how to perform the field update action with the help of workflows. Now inside the field update action, there are basically two different kinds of field updates. Let me show you that. So by today, I'm going to start with the cross object field update action. But before let's understand what does actually cross object field update action mean. See, yesterday what we have done, first of all evaluate that, and then we will understand what is the difference between same object field update and what exactly is the cross object field update action. So see here, according to the yesterday's use case, what we have done, let's discuss this once again. So we were working on this particular use case where actually whenever a new record has been inserted inside the position object, we need to notify the hiring manager. There were two kinds of action. Actually, immediate action as soon as the record is inserted, we need to fire one email immediately. And then the use case also expecting us to solve a few kind of periodic alerts. It was actually expecting that we should even design some sort of periodic alerts, that mean time dependent actions also. So we have seen that, according to the position milestone date, we created all these alerts like 10 days before we were performing the email alert action, even for the 5 days, 2 days, and on the day of the milestone. So for everything we were passing this email alert. Then after 1 day of the milestone, once the milestone date has been crossed, so just 1 day after the milestone date, we were expecting to perform the field update action. And by the way, what we have done, what the code what we have designed yesterday, the automation that we have designed yesterday is for, it is going to change the status field to the closed one. What is a status field? By the way, the status field is a pick list field. So what is going to happen with the last one is that, the, this particular position status field, the value of this position status is going to be closed. This is what going to be happen. So this was the use case what we have solved yesterday. Then we have seen that how to perform the field update action also. Okay, so we created this workflow and we created all these time triggers, and in the inside every time trigger we have applied this this time dependent actions, right? So what we are doing in the last was this. Actually, this is a diagram, a graphical representation, and a diagrammatic representation what we are doing yesterday. So inside the position object, inside the position object, I have created one workflow. I created a workflow inside the position object. So on which object I created the workflow? I created on the position object. It is going to be fired on which object? Position object. And what kind of operation it is performing? It is performing a field update action. It is performing a field update action. What field, or rather which field it is going to be update? It's going to update inside the position object itself. There is a field called as status. There's a field called as status. If it was new, it is updating it and making it to be the closed, like this. This is what the operation it is performing, and this is what the operation it is performing. So if I ask you one thing, on which object your workflow has been created, on which object the workflow has been created, the answer is position. And what action it's performing? It's performing what? Field update action. It's performing the field update action. Which field actually it is updating? It is updating status field. Status field of what? Position object. Status field of position object. So how does it looks like to us? How does it looks like to us? Let's discuss on that. How does this operation actually looks like to us? ये operation कैसा नजर आ रहा है? How does this operation actually looks like to us? See here. Workflow is going to fired on the position object. Workflow is going to be fired on position object. Workflow is going to be fired on position object, and it is going to update the field. It is going to update the field which is there inside the position object. Workflow is going to be fired on position object. It is updating a field inside the position object, status field, location, whatever the field. This field belongs to which object? This field belongs to the position object. So this update operation, this kind of update operation is called as same object update operation. Same object. Why? Because workflow was fired on the position. Workflow was fired on the position object, and it is updating the field inside
position object itself. So this kind of update action is called as same object field update action. Same object. I mean, the object on which the workflow was fired, it is going to update the field inside that object only. It is going to update the field inside that object only. So if it was fired on the position, if it is updating the position itself, so it is called a same object. If it was fired on the account object and it is updating of some of the field of the account, this is called a same object. If the workflow was fired on the hiring manager object and it is updating some of the field inside the hiring manager, so this is called a same object. Again, the same object field update action. If the workflow was fired on the position object, it is updating a field of the position object itself. It is called as what? So everywhere, whenever you perform this kind of operation, when you fire the workflow on this object and you update the field inside this object only, this type of update operation, this type of field update operation is called as same object, same object field update action. This operation is called the same object field update action. And that is what we have understood yesterday. This was the operation what we have done. Now let's understand a new concept regarding the field update action. Inside the workflow also supports you, workflow also permits you to perform another different kind of field update action. What is that? That is called as cross object field update action. This type of operation is called as cross object field update action. Now let's understand what this concept is all about. See, in this example, what I'm demonstrating to you is that the workflow is created on the opportunity object. Let's assume this, let's assume the scenario first. The workflow is created on what? It is created on the opportunity object. And it is going to update, it's what action it is going to perform? It's going to perform a field update action. There are four type of actions that you can achieve with the workflows. What are these? Sending an email alert, the first action. Assigning a new task to a user, second action. Third is field update action. Fourth is what? Sending the outbound messages. So using a workflow, I can perform four different types of actions. I can have four different types of actions. Out of that, this is what? It's a field update action. Now see, although it is updating a field, but of the which object? If it is actually updating the field of the opportunity, we call it to be the same object. But with this diagram, I want to demonstrate you is that the workflow was created on the opportunity object. I mean, the workflow is going to be fired on opportunity. Okay, based on some conditions, whatever the condition is created, could be created and every time it is edited, could be like, created and any time it is edited with meeting subsequent criteria, whatever. So the workflow is fired on opportunity object, but it is updating the field inside the account object. I mean, it is updating a field like the description field. Description belongs to what? Account object. So if the operation looks like, if the operation looks like this, when the workflow is firing, workflow is created on another object and it is updating the field on another object, two separate objects. This is another object, this is one is another object. Workflow is firing on the opportunity. This one is just an example, and it is making some update inside a field of account. This type of operation is called as cross-object field update action. This type of this type of field update action is called as cross-object field update action. This type of action is called as cross-object field update action. So using a workflows, you can even perform, a cross-object field update action. That means you can perform this operation, same object field update action, in which the work on the object which the workflow was created, the field is going to be updated inside the same object. This is called as same object field update action. Using a workflow, you can update a field inside the same object. Even using a workflow, you can perform cross-object field update action. Now, what is a cross-object field update action? Create a workflow on another object, create the workflow on one of the object, and it is going to update a field on another object. This is something called as cross-object field update action. Okay. So now let's understand this. There are few considerations. It is not that straightforward. So with the workflows, whenever we perform a cross-object field update action, there are few considerations that we should know about this.
So whenever we are planning to have a cross object field update action with the help of the workflow, these are the two considerations. These are the two governor limits. We should know about this. What is that? First of all, if you are updating, if you're talking about the two objects, like what I'm saying is that, okay, let's create the workflow and opportunity. On the opportunity object, the workflow is going to be fired and it's making the update on what? On the account. Okay. So we are talking about two different objects. So that both of the objects should be associated with master detail relationship only. If you are planning for the cross object field update action using workflows, if you are, because this thing is, this can also be done with the process builder, let me tell you that, but these are not the considerations with the process builder. When we learn it, we are going to write down this as a difference point. Abhi nahi, baad mein. Okay. So when you are planning to have a cross object field update action using what? Using a workflows. These are the two considerations. These are the two governor limits. These are the two limitations, I could say. These are the two restrictions what we need to know before actually we perform this cross object field update action. So these both objects, these both objects should be related in what? Master detail relationship. That means if the relationship type between the two objects is lookup, if the relationship type between the two objects is lookup, then we cannot have the cross object field update action. We cannot create a cross object field update action. This is the first thing. Second is, by using the cross object field update action, we can update the field from child to parent only. Now, child to parent means what? If these are the two objects, an account and the parent, account and the opportunity. So account is what? Account is parent, opportunity is child. So your workflow must be created on the child only. Workflow must be created on the child only. Remember, your workflow must be created on the child. Workflow must be created on what? Workflow must be created on the child object, always. And it is going to update the field inside what? It is going to update the field inside the parent object. Workflow must be created on what? Child object. It should update the field inside the parent object. और ये रिवर्स नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता है कि you can create a workflow on the parent object going to update the field inside the child object. This is not allowed. This is not allowed. This direction is not allowed. Workflow must be created on the child object. Workflow must be created on the child object, and it should perform the update action in the parent object. Workflow must be created on what? Child object. It must perform the update inside the parent object, and this is irreversible. You cannot create a workflow on the parent and you want this child to be updated. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है? So these are the two limitations. These are the two restrictions. These are the two considerations whenever we perform the cross object field update action using workflows. So whenever we are performing this operation, remember the two objects should be related in the master detail, because if the relationship type is lookup, you cannot perform the cross object field update action. Now, by using the cross object field update action, we can, what we can perform, we can update the field of parent. I mean, the direction should be like this, child to parent, that the workflow should be fired on the child. It should update the field on the parent. So if this means if the field update is from parent to child, the direction is reverse, then you cannot have cross object field update action over here. तो ये दो considerations है जिसका हमें ख्याल रखना है. These are the two factors which we should keep this in our mind. जब भी हम cross object field update action की बात करते हैं, पहली बात relationship होनी चाहिए master detail, और दूसरी बात कि जो update action होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप अप्लाई करेंगे वर्कफ्लो को चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, एंड इट इज गोइंग टू अपडेट द फील्ड ऑन व्हाट? पेरेंट. और पेरेंट से चाइल्ड नहीं होगा कभी भी, इट ऑलवेज बी फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, लाइक दिस. ठीक है, ये दो बातें हैं. अब चलिए मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे. इन दिस एग्जांपल आई टोल्ड यू दिस, ये एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटवीन अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली देयर इज अ लुकअप रिलेशनशिप. ठीक है. So I want to ask few things with you guys. मैंने आपको relationship पढ़ाया है, I have done with the relationship. मैंने आपको relationships पढ़ाई है. आप मुझे बताइए कि between account contact, account and contact, account and case, and account and opportunity. First of all, the relationship type is what? Relationship type is lookup.
Between account and opportunity, there is a lookup relationship. Between account and cases, there is a lookup relationship. Even between account and contact, there is a lookup relationship. But what is the additional behavior that you have observed? Although the relationship is lookup, but what is the additional behavior that time you have observed? Because we have discussed this. चलो आप मुझे बताओ कि first point, what is the additional behavior of relationship we observed between account and contact? Yes. The parent object is deleted. The child object is also deleted. Cascade delete. So cascade delete account and contact. Between account and contact, we observe it supports the cascade delete. Second, between account and case, yes, between account and case. Between account and case, the parent object is Salesforce want delete the account object and means parent object. No, I don't understand. Salesforce जो है वो अलो नहीं करता सर ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए. I am not getting your voice. Humera, please stop. Your voice is not clear. You guys can type me the answer also if you are good in the typing. So if that account record is associated with any case, the Salesforce won't allow to remove the account record. Exactly, that's really good. Saurabh has answered this. If the account is having any associated, any related cases, the Salesforce won't allow you to delete that account record. This was the second point. Now, third question, what is the additional behavior we observe between the account and opportunity? Yes. So first of all, we can create roll-up summary between account and opportunity. This is the first point. And the account record means parent record will remove. The associated opportunity will also be deleted. Excellent. So between account and opportunity, it supports the cascade delete, and between account and opportunity, even you can create the roll-up summary. Okay, so this was the additional behaviors what we have observed. So see here, one more point I'm giving you, between account and opportunity. Between account and opportunity, we can perform cross-object field update action using the workflows. So wherever this point has been written, go and please write it down. Wherever you have written this, write it down. Okay, between account and opportunity, we can perform the cross-object field update action using workflows. तो देखिए वैसे तो अभी हमने पढ़ा कि whenever we perform the cross-object field update action using a workflows, दो चीजें होती हैं. पहली बात कि relationship lookup नहीं होना चाहिए, relationship master detail होना चाहिए. ठीक है. दूसरी बात, you can update the field from child to parent. तो ठीक है, यहाँ child to parent चल रहा है, वो कर रहे हैं हम लोग. Actually, opportunity is the child object and the account is what? Account is parent object. तो ये तो ठीक है. We are creating, we are creating this workflow. We are firing the workflow on the child. And we are updating the field of parent. तो ये तो criteria आप काम कर रहे हैं यहाँ पे. Out of these two, एक criteria fulfill हो रहा है. लेकिन second बोलता है कि relationship आपका lookup नहीं होना चाहिए. Still, अपना relationship master detail होना चाहिए. Still, I am able to do this. Why? Because although the relationship is lookup, it behaves like the master detail. तो ये एक point और आपने add करना है कि between account and opportunity, we can perform cross-object field update action using the workflows. That means we can create a workflow. We can create a workflow on the opportunity object. We can create a workflow on the opportunity object, which can update a field inside the account object. So although the relationship is lookup, but still Salesforce allow you to do this. Salesforce allow you to do this. तो एक पॉइंट आज आप वहां पे ऐड करेंगे आप सभी लोग, ठीक है. और ये पॉइंट उस वक्त इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उस वक्त इस चीज का इंपॉर्टेंस हमें पता ही नहीं था. हम उस वक्त अगर मैं पढ़ा भी देता आपको तो आपको उस वक्त कुछ नहीं समझ में आना था. तो ये इसका वक्त है, ये इसका समय है जब ये पॉइंट आज पढ़ा जाए. तो वैसे तो देखा जाए कि जब क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वर्कफ्लोज के साथ, देयर आर टू कंसीडरेशंस कि पहली बात रिलेशनशिप मस्ट बी मास्टर डिटेल और सेकंड इज डायरेक्शन. तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, वी आर मेकिंग दिस अपडेट एक्शन फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट. दैट मीन्स वी आर फायरिंग द वर्कफ्लो ऑन द चाइल्ड and then we are updating the field inside the parent. So actually we are not making the changes in the direction is this only, but then relationship type doesn't match. Still Salesforce allow us to do this.
तो ये एक पॉइंट आज आपने ऐड करना है आप सभी लोगों ने वहां पे। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यूज केस लेता हूँ और यूज केसेस के जरिए से सीधा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो यूज केस हमारी ऐसी है कुछ कि कॉन्फ़िगर अ वर्कफ्लो रूल ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। वही चीज है जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सेम चीज है। तो हमको वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करना है ऑन द अपॉर्चुनिटी टू कॉपी द अपॉर्चुनिटी स्टेज फील्ड। समझाता हूँ मैं, डोंट वरी, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। टू कॉपी द अपॉर्चुनिटी स्टेज वैल्यू इनटू एसोसिएटेड अकाउंट रिकॉर्ड्स डिस्क्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। डायग्राम के हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में स्टेज की जो भी वैल्यू होगी, दिस वैल्यू शुड गेट बी कॉपीड इनसाइड द डिस्क्रिप्शन फील्ड। अकाउंट के अंदर एक फील्ड होती है, अपॉर्चुनिटी में एक फील्ड होती है स्टेज नाम की। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ जो भी वैल्यू होगी, इट शुड गेट कॉपी इनटू द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अकाउंट के अंदर एक फील्ड होती है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाना चाहिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पे वाई आ जाना चाहिए, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड आ जाना चाहिए। तो जो कुछ भी स्टेज की वैल्यू है, जो कुछ भी स्टेज फील्ड में जो भी वैल्यू है, वो फील्ड यहाँ पे कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है। अब इसी चीज को मैं पहले एक बार आपको यूजर इंटरफेस पे बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमारी यूज केस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू दी अकाउंट, और मैं कोई एक ऐसा अकाउंट ओपन करता हूँ जिससे कोई रिलेटेड मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे कि मर्क इनकॉर्पोरेशन। मर्क इनकॉर्पोरेशन के साथ अगर मैं देखूं तो मर्क इनकॉर्पोरेशन में अपॉर्चुनिटी है कपिल शर्मा। ठीक है, कपिल शर्मा को मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? अब देखिए, आप अगर मर्क में जाते हैं तो यू फाउंड वन थिंग, एक चीज ऑब्जर्व करिए, डिस्क्रिप्शन फील्ड अभी ब्लैंक है। डिस्क्रिप्शन फील्ड में कुछ नहीं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन फील्ड में कुछ नहीं। नाउ व्हाट वी वांट, हमारा यूज केस क्या कह रहा है कि इनसाइड दी अपॉर्चुनिटी देयर इज अ फील्ड कॉल्ड अ स्टेज। अपॉर्चुनिटी में एक फील्ड है स्टेज, जो कि एक्चुअली पिक लिस्ट है, जो कि एक्चुअली पिक लिस्ट है। दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दी दिस पर्टिकुलर स्टेज फील्ड। अब क्या है कि हम व्हाट वी वांट कि व्हेनेवर वी मेक एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट, क्रिएटेड और अपडेटेड, जो भी करूं, मतलब यहाँ पे अब क्राइटेरिया मेरा क्रिएटेड या अपडेटेड रहेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूं, जैसे यहाँ लिखा है क्वालिफिकेशन, यहाँ क्या लिखा है क्वालिफिकेशन, दैट क्वालिफिकेशन वैल्यू शुड कम टू हियर। दैट क्वालिफिकेशन वैल्यू जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाना चाहिए, अकाउंट में आ जाना चाहिए ना, इट शुड कम इनटू द अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाना चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़े से चेंजेस लाता हूँ यूजर इंटरफेस में, ताकि मुझे यही इसी पेज पे सारी चीजें दिख जाए। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में अच्छा स्टेज कॉलम है यहाँ पे, दैट्स ग्रेट यार, ये ऑलरेडी है यहाँ। व्हाट आई वांट कि अपॉर्चुनिटी की स्टेज की जो भी वैल्यू हो, अपॉर्चुनिटी स्टेज की जो भी वैल्यू, आई वांट दिस वैल्यू टू गेट कॉपी ओवर हियर, गेट कॉपी ओवर हियर। ठीक है, रिलेटेड, दिस Kapil Sharma is a related record. First of all, remember, this is related to Merck Incorporation. This is parent, so this is child. This is the child record for Merck Incorporation. Always remember this. So this is going to be applied for the related object, related opportunity only. ठीक है, so मैं हम ये चाहते हैं, this is what we want कि स्टेज में जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस लाऊं, इधर आई इंसर्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करूं या किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में एडिट करूं, तो क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। सो वेन एवर ईदर यू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड, न्यू रिलेटेड अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटी पे चेंजेस करो, तो जो स्टेज में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ डिस्क्रिप्शन में आके कॉपी हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट, ये हमारी यूज केस है। तो आइए यूज केस के हिसाब से काम शुरू करते हैं। तो कुछ पहले होमवर्क्स, ऑफ कोर्स, ऑब्जेक्ट नेम, आप किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना चाहते हैं, ऑलवेज ऑन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट या अपॉर्चुनिटी, इट इज अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये या तो आप कोई नया रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट करें तब भी ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेटेड रिकॉर्ड में आप कोई चेंजेस लाएं तब भी यही होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई योर क्राइटेरिया शुड बी क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड। अब हम रूल कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जिस स्टेज को आप, जिस फील्ड को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो स्टेज फील्ड, अपॉर्चुनिटी की स्टेज फील्ड, तो ऑब्वियसली ये नल नहीं होना चाहिए, ये नल नहीं होना चाहिए। अगर ये नल रहेगी तो फिर आप किसे ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ इसके लिए जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो रूल कंडीशंस है कि हमारा वर्क फ्लो एक्चुअली कब फायर होना चाहिए। तो हमारा वर्क फ्लो तब फायर होना चाहिए कि जब स्टेज की वैल्यू नल ना हो। अगर ये नल है तो फिर वर्क फ्लो फायर नहीं हो। व्हाट टाइप ऑफ एक्शन, ऑफ कोर्स इमीडिएट एक्शन। किस तरह का टाइप है एक्शन का, एक्शन का नाम क्या है, फील्ड अपडेट, फील्ड अपडेट। लेकिन टिपिकली कौन सा फील्ड अपडेट, दिस टाइम वी आर परफॉर्मिंग क्रॉस ऑब्जेक्ट, क्रॉस ऑब्जेक्ट
फील्ड अपडेट एक्शन, ठीक है, ये हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। कौन सी फील्ड अपडेट करनी है? अकाउंट की। अपॉर्चुनिटी की नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटी में अगर अपडेट कर दोगे तो सेम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको क्रॉस ऑब्जेक्ट करना है। तो क्रॉस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक फील्ड है डिस्क्रिप्शन नाम की, और आप ये चाहते हैं कि जो भी स्टेज की वैल्यू हो, जो भी स्टेज फील्ड की वैल्यू हो, स्टेज फील्ड की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाए? डिस्क्रिप्शन में आ जाए। दिस इज व्हाट वी वांट। अपॉर्चुनिटी का स्टेज शुड बी गेट कॉपी इनटू व्हाट? अकाउंट्स का डिस्क्रिप्शन। दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। चलिए, हाँ, कौन सी फील्ड? तो अब देख लेते हैं। स्टेज नेम जो है वो कॉपी होना चाहिए। आइए चलिए चलिए, तो लेट मी परफॉर्म दिस, लेट मी क्रिएट दिस यूज केस। सो लेट्स गो टू द सेटअप मेनू। Inside the build menu, just expand the create menu, ठीक है, expand the workflows and click on the workflow, ठीक है, click on the workflow, continue. What we want to create a new rule, ठीक है, on which object? Opportunity object, opportunity. Click on the next, give the rule name, rule को नाम दीजिए। तो I want to transfer, so I can give sync. सिंक मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह। व्हाट आई वांट टू सिंक? आई वांट टू सिंक अपॉर्चुनिटी स्टेज, शॉर्ट फॉर्म्स दे रहा हूँ, टू अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बस कॉपी द अपॉर्चुनिटी स्टेज फील्ड, है ना, अपॉर्चुनिटी की स्टेज फील्ड को हम कॉपी कर रहे हैं कहाँ पे? टू दी रिलेटेड अकाउंट जो है अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में। आई कैन गिव इट लाइक दिस। तो डिस्क्रिप्शन में अच्छा खासा दीजिए, यहाँ पे आप शॉर्टकट दे सकते हैं। What is the criteria? Criteria is created and every time it is updated. And whenever you select this, remember you cannot apply the time dependent. तो ठीक है, वैसे भी हमको time dependent पे जाना नहीं है। For this use case, we only want the immediate actions. तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। What should be the criteria? Criteria ये कहता है कि opportunity की जो stage value जिस पे हम काम कर रहे हैं, that should not equals to that. The opportunity stage should not equals to keep it blank. Keep it blank, ठीक है। Should not equals to what? Should not equals to null. नल नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से देखने जाए तो यहाँ पे नल वैल्यू नहीं मिलेगी आप, एंड दैट इज आई एम टेलिंग यू टू कीप इट ब्लैंक। सेव एंड नेक्स्ट। सो वी क्रिएटेड वन एक्शन ना, एक्शंस हो गया। अब एक्शन ऐड करना है, तो कौन सी एक्शन है? टास्क, ईमेल नहीं। वी वांट टू परफॉर्म व्हाट? फील्ड अपडेट। सो सिलेक्ट न्यू फील्ड अपडेट, गिव द नेम। तो इसको हम देते हैं जैसे कि sync opportunity stage to the same I'm giving the same, you know, we can give the same description over here, we can give the same description, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि आप फील्ड अपडेट एक्शन मांगा आपने, ठीक है। आप देखिए, आप कौन से ऑब्जेक्ट पे आप वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटी। फील्ड अपडेट एक्शन आपको कहाँ चाहिए? अपॉर्चुनिटी पे या अकाउंट? यहाँ देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप अपॉर्चुनिटी की ही फील्ड अपडेट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको सारी फील्ड्स नजर आएंगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सारी फील्ड्स आपकी अपॉर्चुनिटी की नजर आ जाएंगी। लेकिन फिर बात ये आती है कि अगर हम अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं तो ये तो सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन हुआ, और ये हमारी यूज केस भी नहीं है। हमारा यूज केस तो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी पे रूल फायर हो और वो आपके अकाउंट में डिस्क्रिप्शन फील्ड को अपडेट कर दे। तो मैंने फिर यहाँ से कौन सी फील्ड, कौन सी ऑब्जेक्ट लेना चाहिए? आई शुड टेक दी अकाउंट ऑब्जेक्ट। नाउ इट विल गोइंग टू डिस्प्ले ऑल द फील्ड्स ऑफ द अकाउंट। अब आप ये बताओ कि अकाउंट की कौन सी फील्ड आपने अपडेट करनी? वी वांट टू अपडेट द फील्ड ऑफ कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट किया तो इसने आगे का आई मीन आगे का जो अब इसके बाद क्या करना है वो चीज यहाँ पे लोड होगी। तो अब जो ये फील्ड है इसका इसका टाइप क्या है? इट्स अ लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, एलटीए है, ठीक है। आप कैसे अपडेट करना चाहते हैं? किस चीज से अपडेट करना चाहते हैं? यू वांट टू हैव अ ब्लैंक वैल्यू, कुछ नल, या फिर एक फॉर्मूला? तो मैं एक फॉर्मूला चाहता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? मुझे स्टेज की फील्ड ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब अगर फॉर्मूला पता है तो टाइप करो, और अगर नहीं पता है तो गो विद दिस शो फॉर्मूला एडिटर, ठीक है। तो फॉर्मूला एडिटर की हम मदद लेंगे। वी वांट टू इंसर्ट अ फील्ड। कौन सी फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटी की फील्ड, अपॉर्चुनिटी की स्टेज नाम की फील्ड। तो अपॉर्चुनिटी की स्टेज फील्ड इंसर्ट करो, ठीक है। तो वी वांट टू ट्रांसफर दिस फील्ड वैल्यू, अपॉर्चुनिटी की स्टेज वैल्यू जो भी होगी
अपॉर्चुनिटी की स्टेज वैल्यू जो भी होगी ना, अपॉर्चुनिटी की स्टेज वैल्यू, लेट मी गो टू द अकाउंट्स, मर्क इनकॉर्पोरेशन, और व्हाट वी वांट कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के क्वालिफिकेशन, ये जो स्टेज वैल्यू होगी दैट शुड गेट कॉपीड इनटू द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो दैट इज आई एम लाइक, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चेक सिंटैक्स करूंगा तो ये एक एरर देगा। देखिए चेक सिंटैक्स करूंगा, ये एक एरर देगा। ये क्या एरर दे रहा है कि जो फील्ड है आपकी, कौन सी फील्ड, स्टेज नेम, ये एक पिक लिस्ट फील्ड है, ठीक है। एंड पिक लिस्ट फील्ड्स आर ओनली सपोर्टेड इन सर्टेन फंक्शन, कुछ ही फंक्शंस में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये एरर क्या है, तो ये एरर ये बोलता है कि आप जब भी आप कोई पिक लिस्ट वैल्यू ट्रांसफर करना चाहते हैं, कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में अगर आप जाएं और ये देखें कि स्टेज क्या है, तो स्टेज जो होता है, स्टेज इज एक्चुअली अ पिक लिस्ट वैल्यू, स्टेज इज योर पिक लिस्ट वैल्यू। सी स्टेज क्या है, एक पिक लिस्ट, इस किसी भी पिक लिस्ट वैल्यू को हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमें अगर उसकी वैल्यू देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं होती, कई सारी वैल्यूज होती हैं, और उसमें से एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू है जो ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, और वो फंक्शन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। द फंक्शन नेम इज कॉल्ड एज टेक्स्ट। ये फंक्शन आपको यूज करना है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऑल द फंक्शंस कैटेगरीज, दीज आर द फंक्शंस टाइप्स, ये सारे फंक्शंस होते हैं, आप इनमें से चाहे जो फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया है टेक्स्ट, आई हैव यूज दिस फंक्शन, और ये अपनी जरूरत के हिसाब से आप सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन जो मैंने यूज किया है टेक्स्ट, टेक्स्ट विल गोइंग मी टू रिटर्न, टेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा मुझे, टेक्स्ट रिटर्न करेगा कि ये पर्टिकुलर जो फील्ड है, जो कि एक पिक लिस्ट है, उसमें जो भी करंट सिलेक्टेड वैल्यू, जैसे कि अभी करंट सिलेक्टेड वैल्यू है प्रोस्पेक्टिंग, तो प्रोस्पेक्टिंग को टेक्स्ट फॉर्म में रिटर्न कर देगा। अगर ये वैल्यू है वैल्यू प्रपोजिशन, तो वैल्यू प्रपोजिशन रिटर्न करेगा। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन रिटर्न करेगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया, अब अगर मैं चेक सिंटैक्स करता हूँ, इट इज ये नॉट गोइंग टू गिव मी एनी एरर, नो सिंटैक्स एरर इन द मर्ज फील्ड्स। तो जब भी हम पिक लिस्ट की वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, याद रखिए, जब भी हम पिक लिस्ट की वैल्यू ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, और वो फंक्शन है टेक्स्ट, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन हमेशा ब्रैकेट में रहता है, याद रखो, कोई भी फंक्शन जो रहता है वो हमेशा ब्रैकेट में रहता है, और ब्रैकेट के अंदर आप देंगे आपकी पिकलिस्ट फील्ड का नाम, और इसका नाम है स्टेज। तो व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग टू द डिस्क्रिप्शन, अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टेज नेम का टेक्स्ट, जो भी सिलेक्टेड होगा वो, ठीक है। तो ये हो गया, आपका रूल बन के तैयार है, डन करो और एक्टिवेट करो, डन कर दिया, एक्टिवेट। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट मी स्टार्ट विद द बिगिनिंग इटसेल्फ, लेट मी फर्स्ट गो टू द अकाउंट, ठीक है, ओपन द अकाउंट, मर्क इन कॉर्पोरेशन, open the account, merge incorporation, and let's go to the opportunity. Now I can see inside the opportunity, Kapil Sharma. Let's go to this opportunity. Inside the opportunity, let's make some changes over here. So present it is qualification. I'm making it with the prospective. Yeah. तो ये मैंने क्या किया, updated, created, and every time it is updated. तो every time it is updated वाला action लगेगा. Okay. अभी तक ये डेटाबेस पे कमिट नहीं हुआ है, अब जाके कमिट होगा। बिफोर दैट सी कि आप देख लो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की फील्ड क्या है, ब्लैंक है। नाउ सेव दिस, आई हैव सेव दिस इनसाइड दी अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी में अब मैंने चेंजेस कर दिए हैं, और अपॉर्चुनिटी की स्टेज वैल्यू हो गई है प्रोस्पेक्टिंग। नाउ लेट्स गो टू दी अकाउंट एंड जस्ट रिफ्रेश दिस। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे आ गया है प्रोस्पेक्टिंग, डिस्क्रिप्शन पे आ गया है प्रोस्पेक्टिंग, वॉट एवर दिस वैल्यू ऑफ द स्टेज ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी कॉपीड ओवर, ठीक है। तो आपने फील्ड अपडेट एक्शन किया, कैसा, क्रॉस ऑब्जेक्ट, क्रॉस ऑब्जेक्ट, यू हैव मेक चेंजेस इनसाइड द अपॉर्चुनिटी, and that with the help of opportunity you were able to make some changes inside the account object. So this is called as cross object field update action. Now whenever I make any changes over here, जितनी बार मैं यहाँ पे changes करूँ, whenever I make any changes over here, let's make it to the proposition analysis, save it, and commit the changes inside the database. Come here, refresh this. Perception analysis. See, this value is going to be copied over here. This value is going to be copied over here. This is called as cross object field update action. ठीक है, cross object field update action.
Now by tomorrow, I'm going to start with the new task. What? Because I first need to, I first need you to explain what exactly is the task. What does it means by the event? What is task object? What is event object? Then what is the significance of these two task object and event object with respect to other objects? So probably, before starting this, we are going to have a lengthy discussions of almost half an hour. We are going to discuss all this, and then we will start how to assign a task with the help of workflows. Okay? So mix up नहीं करेंगे. I don't want to mix anything. एक दिन बढ़ जाए कोई problem नहीं, लेकिन जो दिन का concept है वो उसी दिन चलेगा. So by tomorrow, I'm going to start with the assigning a new task with the help of workflows. Assigning a new task with the help of workflows. But before that, we are going to learn what does a task means, what does an event means, and what is the significance of these two things. Okay. Chalo, let me first stop the recording.